Hello students, this is Ritvik Dubey, your computer teacher. In this video class, I will discuss about computer virus. Okay, so chapter number 3, computer virus. This is part 1, video part 1. See, what is the meaning of computer virus? In our day-to-day life, if we talk about virus, what is the meaning of virus? Something which is not needed, something which is harmful for our body. Okay, if we talk about the biological virus, okay, so what is the biological virus? It is something which is not necessary, which is not needed in our body. Okay, any foreign substance which is harmful for our body can be considered as a virus. But what is computer virus? Computer virus is a program, if installed in our system, it will cause harm to our system. Okay, so what is computer virus? Computer virus is a computer program that attacks a computer. It is written by virus programmers. Now, what is the meaning of programmers? The software engineers only, okay, the developers, the person who write the programs. So virus is also a program written by the programmers. Clear? Okay. Virus, what is the full form of virus? Vital information resource under siege. Okay. Now, what is the meaning of siege? Siege means किसी चीज को बंद कर देना, है ना, किसी चीज को रोक देना. So vital information means important information resource will be under siege. So this is the full form of virus in computer. Clear? Please remember this full form. The full form of virus is vital information resource under siege. Clear? A virus can copy itself, attach itself to other applications or files, and infect a computer. Okay, so these are the capabilities of a virus. It can copy itself and then attach to other applications or files, and then it will infect your computer. Clear? Most of the viruses stay active in computer's memory until you turn off the computer. I mean, the moment you turn on the computer, okay, all those viruses will be activated. And when you will turn off the computer, they will be deactivated. Clear? Types of computer viruses. See, boot sector virus, then Trojan horses, program file virus, computer worm, polymorphic virus, network virus, directory virus, sweeper, malware, and spyware. Okay, so please remember all these viruses. Okay, all the names of the viruses, that is boot sector virus, Trojan horse virus, okay, program file virus, computer worm, polymorphic virus, network virus, directory virus, sweeper, malware, and spyware. Now, how to remember the names? See, like this you can remember BCD. Okay, B, C, D. After BC comes C, after C, D comes. BCD. Then in the second set, remember MN. Okay, O is absent. MNOP. Okay, MNOP plus O is absent. MN double P. Then your SST. SST means social studies. Okay, SST means social studies. So BCD, MN, O is absent. Okay, double P and then SST. BCD. In the first set, remember BCD. In the first set, remember BCD, then MN double P, and then in the third set, remember SST. Okay, so this is how you can remember. B for boot sector virus. Okay, C for computer worm. D for directory virus. Okay, D for directory virus. M for malware. N for network virus. P for polymorphic virus. Again, P for program file virus. S for sweeper. And then S for spyware. And T for Trojan horses. Okay, T for Trojan horses. Clear? Okay, I have not written here Trojan horses.
You can write in your notes Trojan horses. So like this, we can remember the names of the virus. It is very easy. BCD, MNPP, MNPP, and then in the third set, remember SST. BCD, close your eyes, all of you, close your eyes. BCD, then MNPP, and then in the third set, SST. B for, all of you, close your eyes. B for boot sector. C for computer worm. D for directory. M for malware. N for network. P for polymorphic. P for program file. S for sweeper. S for spyware, and T for Trojan horses. Okay, like this, you can remember the names of the viruses. Clear? Okay, let's start with boot sector virus. Okay, what is boot sector virus? A hard disk or hard drive consists of smaller sections known as sectors. Okay, first of all, you should know what is the meaning of sector. So your hard disk. So what is hard disk? It is the secondary storage device where huge amount of data is stored. Okay, for example, in my laptop, the hard disk size is 1 terabyte. I mean 1024 gigabyte GB. Okay, so hard drive consists of, or hard disk consists of smaller sections. Those smaller sections are known as sectors. Okay, and the very first sector, okay, the very first sector among all the sectors is the boot sector. Clear? So boot sector is the first sector among all the sectors, okay, within the hard disk. The boot sector is the area. Boot sector is the area of hard disk where valuable information is stored. Boot sector हार्ड डिस्क का वो एरिया है जहां पर बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन स्टोर होकर के रहता है. और बूट सेक्टर वायरस क्या करता है? इट डैमेजेस दिस बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क. मतलब सोचो, जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसी को डायरेक्टली अटैक कर रही है बूट सेक्टर वायरस. ओके, बूट सेक्टर वायरस गेट्स एक्टिवेटेड एट द टाइम ऑफ बूटिंग. बूटिंग, व्हाट इज बूटिंग? What is the meaning of booting? Booting means it is the process where operating system gets loaded from hard disk onto the RAM, that is random access memory, when we turn on our computer. Okay. Example of boot sector virus is stone virus. So remember the example of boot sector virus is stone virus. Clear? So I request all of you to remember all the points. Okay. Now let me tell about booting. What is booting? See, this is the hard disk. Okay, this is the hard disk, and this is your RAM. Okay, this is your RAM. So operating system gets loaded from hard disk to random access memory when we turn on the computer. Okay, this process is called as booting. So booting is the process that starts the operating system when we turn on the computer. ठीक है, जब हम अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो होता क्या है, हमारे हार्ड डिस्क के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मान लो मैं अभी विंडोज 7 यूज कर रहा हूं तो, या कोई विंडोज 10 यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो हार्ड डिस्क से रैम पे लोड होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तभी जाके हमारा कंप्यूटर खुलता है. ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बूटिंग. ओके, सो यू कैन सी दिस हार्ड डिस्क. ओके, सो वेरियस सेक्टर्स आर देयर विद इन दिस हार्ड डिस्क. ओके, and the very first sector is boot sector, and boot sector virus, it harms the boot sector. ठीक है, it attacks the boot sector where valuable information is stored. ठीक है, हार्ड डिस्क में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, जिसमें से कि सबसे पहला सेक्टर जो होता है वो बूट सेक्टर होता है. और बूट सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर होकर के रहता है. तो बूट सेक्टर वायरस क्या करता है ना, बूट सेक्टर पे अटैक करता है, जिससे कि हमारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है हार्ड डिस्क में वो डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं. क्लियर? देन ट्रोजन हॉर्सेस. It is a coded program that masks the existence of a virus or malware by making it appear friendly.
by making it appear friendly. It steals information from the computer. It steals information from the computer. So what is Trojan horses? It is a coded program. Sir, what is the meaning of coded? Somebody has written the program. Somebody has written the coding. Sir, what is the meaning of coding? See, software engineers create softwares, okay? All the softwares consists of some programs, and all the programs consists of some set of instructions, okay? Those instructions, each and every line within a program is called as a code, So it is a coded program that masks the existence of a virus. What is the meaning of masks? यानी कि वो छिपा देता है ना, वो पता नहीं लगने देता है कि वायरस है. Masks मतलब छिपा देना. So it is a coded program that masks the existence of a virus or malware, ठीक है, by making it appear friendly. ऐसा लगेगा कि हाँ इससे कुछ होगा नहीं, है ना, ये नॉर्मल है, लेकिन वो क्या रहेगा, वायरस रहेगा. So it steals information from the computer. It can appear as a game and mobile application. Example of Trojan horse, backdoor and exploit are the examples. Okay, so this is a kind of virus only. Then program file virus. What is program file virus? It infects the program or executable files like the ones with extension .com or .exe. Exe means executable file, or .sys means system files. Okay, so in our computer there are varieties of files. Okay, some files are Word files, some files are Excel files, some files are .com files, some files are .exe files, some files are .system files. Okay, so what program file virus does, it infects the program or executable files like .com, .exe and .sys. It replicates itself and infects files. Okay, what is the meaning of replicates? It creates a copy of itself and then infects our files which are stored in our computer system. It either causes permanent damage or makes the file unreadable. Okay, we will not be able to read the file if the file is infected with program file virus. Okay, so it can delete the file completely or it can make the file unreadable. Unreadable मतलब फिर वो फाइल को हम लोग खोल के देख नहीं पाएंगे उसके अंदर क्या है. ठीक है. Example of program file virus is Sunday. Yes, it is the example, the name of the virus. Okay, program file virus. Okay, now let us learn about computer worm. A worm is a malicious program. What is the meaning of malicious program? Harmful program that duplicates itself, creates a copy of itself. It creates copies of itself and fills up the disk space with these copies. What is the meaning of disk? The storage device, है ना, जहां पे हमारे डेटा स्टोर होकर के हैं, उसके अंदर बहुत सारी जगह हैं, उन जगह में ही तो जाकर के डेटा हमारे स्टोर होता है ना. तो ये कंप्यूटर वर्म क्या करता है, अपने ही कॉपीज को बनाते चला जाता है और सारे के सारा जगह को, डिस्क के सारे जगह को भरता चला जाता है. तो अननेसेसरी जो चीज हमें नहीं चाहिए उससे हमारा डिस्क पूरा भर जाएगा, तो फायदा क्या. सो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ वायरस. ओके, इट स्लोज डाउन द सिस्टम. Example of computer worms are Michelangelo and MS Blast. Okay, polymorphic virus. Let us discuss about polymorphic virus. A polymorphic virus appears in different forms. It infects a file and changes its binary pattern to avoid detection by an antivirus program. Okay, so some antivirus programs will not be able to detect polymorphic virus because it changes its binary pattern. What is the meaning of binary? See, each and everything in the computer is stored in the form of zeros and ones. Okay, an antivirus program has the capacity to detect the virus, okay, by reading the binary pattern. But this virus changes the binary pattern. Suppose if the file is stored in the format 1010, it will make 010. Which virus? This virus will make it 010. I mean, it will change the binary pattern. Okay, and then the antivirus program will not be able to detect that virus. Okay, example of polymorphic virus is
or are Elkin and Marburg. Now let us discuss about network virus. It enters the system through a network. It enters the system through a network. What is the meaning of network, sir? Group of computers connected, okay, group of computers connected with each other, okay, where they share the files, okay, or resources such as printers, scanners, all these things are shared. It is called as a network. It is called as a network. So what is the meaning of network? Group of computers connected with each other. Group of computers connected with each other in order to share information and resources. Okay. Okay. So it enters the systems through a network. Network virus हमारे सिस्टम में आ जाता है जब हमारा सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है. ओके. It generally multiplies through shared resources and spreads through local area network and sometimes through the internet also. Okay. So when we make use of internet, okay, there are some instances where our computer gets infected by viruses. Clear? It infects our computer in a network, then moves on to the next computer and the cycle keeps on going. तो एक नेटवर्क में मान लो 10 कंप्यूटर्स हैं, एक मिनट के लिए मान लो एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें कि 10 कंप्यूटर्स हैं. पहला कंप्यूटर इफेक्ट हो गया, फिर वो वायरस दूसरे कंप्यूटर में जाएगा, फिर तीसरे कंप्यूटर में जाएगा. ऐसे करते करते वो नेटवर्क में सारे के सारे कंप्यूटर को वायरस से इन्फेक्ट कर देगा. क्लियर? सो दिस इज नेटवर्क वायरस. Example of network virus is SQL scanner. Okay, SQL scanner. Directory virus. See, what is the meaning of directory? Directory means folder. Okay, in computer, what is the meaning of directory? Directory means folder. It is designed to change the location of the infected file. The file which is infected, it will change the location of that file. Which virus? Directory virus. है ना. जैसे एक फाइल मान लो डी ड्राइव में, तो वो इन्फेक्ट हो गया है, उसको वो भेज देगा ई ड्राइव में, लोकेशन चेंज कर देगा, है ना. So when you execute it, you will never know that you have run a virus. Okay. Example of directory virus is dir2. Sweeper. It is a virus that looks like an antivirus program. ये तो सबसे खतरनाक है. ये ऐसा वायरस जो कि एंटीवायरस के जैसा दिखेगा आप लोगों को, और आप लोगों को वो प्रोवोक करेगा कि आप लोग उसको डाउनलोड कर लें. This tricks the user into downloading it. Okay. The virus then installs malicious code on the computer by making use of Google services. है ना. इंटरनेट सर्विसेज से या गूगल सर्विसेज का इस्तेमाल करके वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल करेगा malicious कोड को. सर malicious कोड मींस हार्मफुल कोड. Okay, which will reduce the processing speed of your computer, which will harm your computer. Those codes are called as malicious code. Sir, malicious code का मतलब क्या होता है? वो कोड जो कि आपके कंप्यूटर के लिए हानिकारक है, harmful है. The makers of Sweeper created this program as a way to blackmail computer users into disclosing their credit card information. ठीक है. तो स्वीपर को बनाने वाले लोगों ने क्यों बनाया इसको? ताकि वो कंप्यूटर के यूजर लोगों को ब्लैकमेल कर सकें, है ना. उन लोगों के क्रेडिट कार्ड के इंफॉर्मेशन को वो चोरी कर सकें. Once installed, it creates fake malware files on the computer which get started when user logs into the system. Again, what is the meaning of malware files? Foreign files which are not needed, which are harmful. Okay. Then it manages the browsing activity of the user. It manages the browsing activity of the user. मतलब क्या ब्राउज कर रहे हो, इंटरनेट में क्या चीज ब्राउज कर रहे हो, वो सारे के सारे एक्टिविटी को ये मॉनिटर कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा. Then let us talk about malware. What is malware? Say it is made up of two words. One is malicious and the other one is software. So malicious software. Okay. Harmful. Malicious means harmful. So it refers to a program or file that is harmful to a computer. Clear? It includes computer viruses, worms, Trojan horses and spyware. ठीक है. कंप्यूटर वायरस, worms, Trojan horses and spyware मतलब कोई भी foreign substance है या कोई भी foreign
सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए हानिकारक है, all those will be called as or considered as a malware. ठीक है, मालवेयर किसको कहा जाएगा? जो हमारे कंप्यूटर में जरूरत नहीं है, जो हमारे कंप्यूटर को हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को रिड्यूस कर सकता है. All those are called as malwares. These malicious program or harmful program can perform a activity of functions including stealing, एनक्रिप्टिंग और डिलीटिंग सेंसिटिव डेटा. आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा होगा है ना, उसको डिलीट कर देगा, चोरी कर लेगा. एनक्रिप्ट मतलब उसको चेंज कर देगा कि आप उसको फिर खोल नहीं पाओगे. ठीक है, अंदर का सारा वो जानकारी ले लेगा. ऑल्टरिंग, हाईजैकिंग कोर कंप्यूटर फंक्शंस एंड मॉनिटरिंग यूजर्स कंप्यूटर एक्टिविटी विदाउट दैट परमिशन. आप अपने कंप्यूटर में क्या कर रहे होगे, सारा का सारा चीज वो रिकॉर्ड कर रहा होगा, मॉनिटर कर रहा होगा और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा. ठीक है. Spyware. Let us discuss about spyware. It is a kind of malware that is designed to collect information and data of users and observe their activity without their knowledge. ठीक है, स्पाईवेयर नाम से पता चले. स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूस. तो एक प्रकार का मालवेयर है जिसको कि डिजाइन किया गया है ताकि आपका इंफॉर्मेशन या फिर डेटा कलेक्ट किया जा सके, है ना, और आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हो कंप्यूटर में वो सब चीज को ऑब्जर्व किया जा सके आपकी जानकारी के बिना, विदाउट योर नॉलेज. Such programs can collect personal information like password and credit card information. ठीक है, ऐसे ऐसे स्पाईवेयर्स भी हैं जो कि आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, पासवर्ड हो गया, ये सब आपका वो चोरी कर सकते हैं. It can also change the computer settings resulting in slow speed. It is sometimes also referred as tracking software. Tracking software क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये ट्रैक करते रहते हैं आप क्या क्या कर रहे हो, सारा चीज का ट्रैकिंग होते रहता है, रिकॉर्डिंग होते रहता है. In the workplace, such software may be installed or on corporate laptops to monitor employees' browsing activities. मुझे याद आता है अपने भाई का, वो अभी पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. तो मैं उसको पूछा तू फेसबुक और व्हाट्सएप तो चला ही लेता होगा अपने कंप्यूटर में? तो बोला नहीं भैया, नहीं चला पाता हूँ. क्यों? मैं बोला क्यों नहीं चला पाते हो? बोला कि कंपनी ने इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि हम लोग कोई भी एक्टिविटी इसके अंदर में कर रहे हैं ना, वो सारा चीज वो लोग गवर्न कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, उन लोग को दिख रहा है. अगर मैं यहाँ पे फेसबुक कुछ भी अगर चलाता हूँ तो वहां पे उन लोगों को पता चल जाता है. ठीक है, तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है. सो इन द वर्क प्लेस सच सॉफ्टवेयर मे बी इंस्टॉल्ड ऑन द कॉर्पोरेट लैपटॉप्स टू मॉनिटर एम्प्लॉइज ब्राउजिंग एक्टिविटीज. Spyware can be difficult to detect. Often the first indication in case of computing device. देखो स्पाईवेयर को डिटेक्ट करना थोड़ा कठिन है, लेकिन इंडिकेशन क्या है, कैसे पता चले या कैसे हम लोगों को थोड़ा सा अंदेशा हो जाए कि हाँ हो सकता है कि स्पाईवेयर आ चुका है. सबसे पहला तो हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड कम हो सकता है और नेटवर्क कनेक्शन का स्पीड भी कम हो सकता है ना. हम जब अपने कंप्यूटर को किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका स्पीड कम हो जाएगा. मोबाइल फोन्स में आपका डेटा जैसे मान लो हर रोज का 2 GB देता है जियो कंपनी, तो वो जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है. आप कुछ यूज नहीं कर रहे हो फिर भी खत्म हो जा रहा है. और आपका बैटरी जो है यूज नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी 70% चार्ज है, तो फटाक से आपका 10 मिनट बाद जाकर के देख रहे हो 60% हो जा रहा है. इसका मतलब है कि कुछ स्पाईवेयर शायद हो सकता है मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में आ चुके हैं. ओके, so this was all about computer virus, types of computer virus. In the second video class we will learn about computer virus, okay, their kinds, how to deal with them, all those things. Okay, so thank you so much for watching this video. Bye bye.